Hi, good evening. We are going to talk about elimination reactions and elimination versus substitution. We'll end it up with some Grignard reagents. That's the plan आज के लिए. How are you doing on this wonderful Tuesday evening? Good evening. Hi, Mission MBBS. राम जी, प्रणाम. I'm great. आप कैसे हैं? तो शुरू किया जाए. मैंने लास्ट सेशन में किया था, क्या किया था? हम लोगों ने भी wrapped up SN1 reactions and then E2 reactions में डिटेल में गए. And something interesting that came out in E2 reaction जो SN2 में नहीं था. Normally SN2 और E2 compete करते हैं और SN1 और E1 compete करते हैं. वही हम लोग देखेंगे आज, ठीक है? We're going to start talking about E1 reactions. Before we do that, एक दो सवाल करते हैं जो last session से related है. That's our style, right? We start the session off with some questions ताकि everyone stays interested. And अगर पिछला session miss कर दिया तो it's okay. You can still solve these questions anyway. Okay, so इसमें से कौन से कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसमाइजेशन? अगर रेसमाइजेशन की बात हो रही है, दैट मींस सम कार्बोकैटायन मस्ट बी फॉर्म्ड, राइट? अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो मस्ट बी एन SN1 रिएक्शन और एन E1 रिएक्शन. यहाँ पे लेट्स गो विद SN1 रिएक्शन. क्यों? क्योंकि ये बस हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है. हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं. जस्ट लिटरली जस्ट पुट वाटर एंड हैपेंस. वाटर इज अ वीक बेस. ओके, ठीक है, देखते हैं. विल सी. सो ओके, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला है बेंजाइल क्लोराइड. फिनाइल रिंग है, फिर CH2, फिर Cl, राइट? So this is a primary carbon. Okay. What about this? This is also primary. Okay, but benzyl काफी स्टेबल होता है. इंटरेस्टिंग. ठीक है, ठीक. अगर कैटायन बने तो काफी स्टेबल होगा. ठीक है. बट होल्ड ऑन, सोचना पड़ेगा इसके बारे में. Benzyl carbocation may be stable, but does this undergo hydrolysis or not? You'll have to think about this one. Okay, देखते हैं. What about this? ये है primary. अगर कार्बन की बात करें, this one is tertiary, so this seems very likely, very likely. What about this? Do you think this is possible? पहला वाला बेंजाइल कार्बोकेटायन तो स्टेबल लग रहा है, बट SN1 रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, यूजुअली टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी. ठीक है, सो 4 तो डेफिनेटली है आंसर में. ओके, रेसमाइजेशन मतलब कार्बोकेटायन बनेगा और यू विल गेट बोथ द थिंग्स. यू विल गेट R कॉन्फ़िगरेशन एंड S कॉन्फ़िगरेशन. आई नो हम लोग R और S की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वी डोंट टीच इट स्पेसिफिकली बिकॉज सिलेबस में नहीं है, बट जनरल आइडिया ये है कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी. ठीक है, एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी. एनसीईआरटी में ये सब है. बट व्हाई नॉट वन? वन तो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा. वन में क्या दिक्कत है? सोच के बताइए. व्हाट डू यू थिंक? वेल, हियर्स द डील एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. अगर आप इसको करो, डू यू थिंक इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट वन? आपको क्या, आई लाइक योर इनपुट ऑन दिस वन. इफ आई मेक अ प्लस चार्ज ओवर हियर एंड अ प्लस चार्ज ओवर हियर, इन दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है? अगर मैं Cl हटा रहा हूं, ओके, आ गया प्लस चार्ज. सो दिस इज बेसिकली अ बॉन्ड. लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस, जस्ट दिस वन बॉन्ड. फिर से ये गए इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. दिस गेट्स अ प्लस चार्ज, दिस गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. बट इसके साथ और क्या क्या है? देयर इज योर फिनाइल रिंग, उसके साथ you have H and you have another H. So essentially you have this as a carbocation, which is really stable. This is awesome. ये बहुत सही है. But why will there be a racemization? ये chiral तो है ही नहीं. ठीक है? Be careful about this. Whereas here it is clearly chiral. There is no doubt whatsoever. ठीक है? अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालते हैं, you have CH3 and you have methyl on this one, you have ethyl on this one, and you have H. This is a chiral carbon. स्पेशली अगर मैं उसमें OH लगाऊं, इस तरफ उस तरफ, डिपेंड ऑन व्हिच साइड वांट इट, फ्रंट बैक एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, कूल. हेंस द आंसर शुड बी ओनली 4. डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. डोंट थिंक कि अरे बेंजाइल कार्बोकेटायन तो बहुत स्टेबल होता है, बहुत अच्छा है. ठीक है, ऑल दैट इज गुड, बट वेयर इज द क्वेश्चन रेसमाइजेशन जब कार्बोकेट, जब देयर इज नो chiral center. Yeah, so this is the answer for this one. Okay, let's start with the next type of beta elimination reaction. Beta elimination, yeah. अल्फा कार्बन वो है जिसमें X यानी कि हेलो एल्केन लगा, हैलोजन लगा हुआ है. बीटा मतलब उसके बगल वाला. बीटा बेटा जो भी बोलो, वहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए और वो हाइड्रोजन हट जाएगा, इसलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं. बेटा फॉर रिकैप, विच टाइप? E1. हाउ इज E1 डिफरेंट फ्रॉम E2? वेल, E1 एनालॉग है SN1 का. सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा. अब फर्क क्या है? दे आर कंपीटिंग प्रोसेसेस एंड जस्ट लाइक SN1, दिस इज अ 2-step process. The rate determining step is the formation of a carbocation, just like SN1. और उसके बाद
इट विल रैपिडली, मतलब जल्दी से लूज अ बीटा प्रोटॉन, मतलब कि बीटा पोजीशन पे प्रोटॉन होना चाहिए तभी तो लूज करेगा, एंड यूजुअली सॉल्वेंट में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज, यहाँ पे आई गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ सेटअप फॉर यू। रिमाइंड मी कि ये मुझे इसका बैकग्राउंड बदलना है बिकॉज दिस हैज अ डिफरेंट लिंक, ये पुराना लिंक हो, दिस इज आई नीड टू अपडेट दिस, यार नीड टू रिमेंबर, फॉरगॉट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ दिस वन। ऑलराइट, एनीवे डजंट मैटर, ठीक है। दिस इज अ टर्शरी कार्बन, सॉल्वोलिसिस लिखा है। अब देखो E1 E2 SN1 SN2 में तीन चीज है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबस्ट्रेट, ओके, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, अगर जस्ट ये हो रहा है नाउ। सो हियर वो ये सब तीन चीजें क्या है, दिस इज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज अ सॉल्वेंट, एंड ऑल्सो वेल इंटरेस्टिंगली CH3O माइनस ही यहाँ पे, that itself is your, it's a weak base, काफी weak है, it's a solvent as well as nucleophile, but here we are not doing nucleophilic substitution reaction, we are doing elimination reaction, we'll see क्या होता है, because यहाँ पे heat है, the biggest difference between SN1 and this sort of a reaction which is E1 is कि यहाँ पे heat है। Let's look at the mechanism. पहला step formation of carbocation, second step is attack of the base, कौन सा base? Weak base, CH3 oil, it's not a strong base, okay cool, ठीक है। कार्बोकेटायन कैसे बनता है? सिंपल, ये चला जाता है, दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, leaving group good, yeah, the same thing, right? Iodine better than bromine, better than fluorine, etc., same चीज है, क्लोरीन होना चाहिए ना, ठीक है, क्लोरीन डाल दो, ओके कूल, they're all good leaving groups in this order, this is the rate determining step, सबसे slow step है, ये कार्बोकेटायन बन गया, now that's done, this could form a race mix, no not race mix, something else, यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, there's an attack of a base, what base? This base, CH3OH, but not in the form of CH3O minus, not this, okay, CH3O minus अगर exist करता, that would be a strong base, and that would prefer to undergo the E2 mechanism. Okay, let me write that here. If you had CH3O minus, that would be a strong base. ठीक है? And how do you get that? That's the same as alcoholic KOH. Alcoholic मतलब ये CH3OH alcohol ही तो उसमें KOH डाल दो तो ये बन जाएगा. That would prefer E2. Here we are doing E1. Okay, cool. ये बेस न्यूक्लियोफाइल दोनों है, सी a base can be a nucleophile but nucleophile need not always be a base, right? Okay, cool. This guy, a base is always a nucleophile, this is a base and it has a couple of electrons over here which will abstract this proton, that's what we are saying, ठीक है। What kind of proton? This is a beta proton. अब बीटा प्रोटॉन हट गया, बीटा प्रोटॉन हट गया मतलब कि remember प्रोटॉन हट रहा है, so it's not going to take the electrons with it, हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के is a proton, right? So H plus goes over here, इसके इलेक्ट्रॉन jump here, that's what these arrows showing. ये एरो का शुरुआत होना मतलब those are the two electrons, these two electrons, and they jump here, that's the pi bond, that's the double bond, and then this plus charge goes away, that's exactly what is happening over here. और बचा क्या ये, अब ये कैसे हो गया, दिस डजंट सीम लाइक अ वेरी स्टेबल थिंग, पानी भी तो है, नहीं पानी नहीं है, इट्स जस्ट दिस थिंग, ओके कूल, व्हाट हैपेंस टू दिस, दिस इज बगिंग यू, इजंट इट, इज बगिंग मी एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट, दिस विल जस्ट रिएक्ट विद योर, क्या था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, विल गिव यू HI, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, या इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, आयोडीन तो निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है, निकलने के बाद बनता है कार्बोकेटायन, ओके विल सी दैट हैपनिंग वेरी सून, एंड देन उसका जो बगल वाला हाइड्रोजन है, बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, दिस इज द प्लेनर कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन, एंड इन दिस केस तीनों कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड है, ओके, सो वन ऑफ दोस हाइड्रोजन, एनी वन ऑफ देम इन दिस केस goes away along with the base which is weak, not very strong, ठीक है, ले जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ गया, ले नहीं गया क्या, अच्छा इस वाले को ले आ रहा है, ठीक है, it's taking this one off, so it takes that away, goes away, and that's it, you've got double bond right here, that thing right there, that's a double bond. Cool animation, right? Pretty cool. I like it. It's very interesting, very intuitive, and there you go. It's beautiful. It's actually quite amazing. It takes into account the whole stereochemistry of stuff and all of that as well. Stereochemistry, मैंने अभी तक उसकी बात की नहीं. We'll see a couple of questions when we talk about stereochemistry of this sort of a thing. Okay, cool. Cis trans isomerism specifically उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. ठीक है. चलो. ठीक है. So, what are the conditions that we have spoken of so far? We have to have a weak base. You have to have a strong base मतलब E2 mechanism, okay, sorry, strong base मतलब yeah, correct, E2 mechanism, E1 mechanism के लिए weak base चाहिए, और हमको चाहिए क्या चाहिए, yeah, that's pretty much it, and a good leaving group, okay, is unimolecular मतलब कि we don't care about the concentration of the base,
Doesn't matter. It's only the substrate की concentration that the rate is proportional to. Okay. And it's a two-step process. मैं बार बार ये बोल रहा हूँ. The number E1, E2 has to do with the order of the reaction. Nothing. It has nothing to do with the whole क्या बोलते हैं number of steps. Okay. All right. Cool. Number of steps के यहाँ पे because reaction intermediate बन रहा है कार्बोकैटायन तो rearrangement हो सकता है. Rearrangement मतलब कि hydride shift, methyl shift, etc. etc. Usually hydride shift more than methyl shift. That's it. And this is the way the rate looks like. Okay. Proportional alkyl halide. मैं उसी चीज को substrate बोल रहा था बार बार. Now, just like हम लोग पहले सब करते रहे, we'll quickly do this as well. Voice is low, is it? Okay, hold on. Let me increase the gain here. Is this better? Is this better? Is this better? Oh, this is weird. This keeps happening for some reason. इसका mic का volume कम हो जाता है अपने आप. This is so strange, huh? Thanks for pointing it out, dude. Hold on. I fixed it last time. I remember that you guys told me about it and I fixed it and it looks like it's gone back to that same old funny thing. 1 minute. Play sound, input, HDMI. No. Headset. Okay, cool. Let's increase this. Did that change anything? No, it did not. How about now? Oh yeah, that's so much better. Better? Okay, hold on. Let's see this. This. I think this is good now, right? Abhi आवाज ठीक आ रही? Must be better now. I did this exact same thing last time around. पता नहीं ये this thing has a mind of its own. It keeps changing the settings. Yeah. Okay. Thanks, Ramri. Okay. So factors affecting the E1 reaction. कौन से factors हैं? 4 factors हैं. Just like what we did in SN1, SN2 and E2. Same ही factor same है. उनका effect अलग है. ठीक है. Nature of alkyl halides you can guess this already. Tertiary greater than secondary greater than primary. क्यों? Carbocation बन रहा है and also benzyl is being better. Okay, cool. Nature of base, weak base. Nature of solvent, solvent. देखते हैं, solvent देखते हैं. Leaving group ability is going to be I, bromine, chlorine, same ही हुआ. Nature of alkyl halide, we can go through it. ठीक है. Carbocation stability depend करता है. And tertiary is the best. We already talked about this. Nature of base should be a weak base. क्यों? क्योंकि अगर strong base हुआ तो E2 चला जाएगा, है ना? But the rate is unaffected. Rate is unaffected by the concentration of the base. Sure, weak base favors E2. Why? Because if you put a strong base, it would rather undergo the E2 mechanism. What is the E2 mechanism? मैं last session में कर चुका हूँ. Please check it out. Okay. What about solvent? Does the solvent matter? It does. It does. It does. If you use a polar protic solvent, polar मतलब पानी जैसा, protic मतलब जिसमें H हो, right? That is great. क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल हो जाएगा. This is very similar to SN1 reaction. SN1 में भी यही कर रहे थे हम लोग. We form a carbocation and the leaving group जब निकल जाता है तो वो भी stabilize हो जाता है, right? क्यों? क्योंकि उसके around polar groups हैं. Solvent के that will stabilize it. That's the exact same thing that's happening over here. Here's the representation of this. Okay, so this is the leaving group, the halogen that left I minus or anything else. It is surrounded by a lot of water molecules. Polar, protic, weak checks all those boxes. Polar, protic is one box and weak is the other box. पानी हो सकता है, CH3OH भी हो सकता है, etc. etc. ठीक है. And R plus the carbocation also stabilized with this. Leaving group ability तो straightforward है, ठीक है. जो आसानी से leave करेगा is good. That's great, है ना? It gets a negative charge. That's the only extra thing here. But the order is the same. Nothing fancy. I minus greater than Br minus greater than Cl minus greater than F. Okay. So E1 और SN1 compete करते हैं. Okay. The main difference is temperature. Okay. Because both of them undergo the same carbocation mechanism. तो फर्क क्या है? फर्क है heat का. Primarily that. Okay. ये बड़ी चीज है heat. Usually they write 80 degrees Celsius or more. That's hot. 50 to 80, that's hot. Below that is not really hot. Okay, here's a quick question. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर इन E1 रिएक्शन? E1 रिएक्शन में सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? 2 स्टेप प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, गुड लीविंग ग्रुप्स आर फेवर्ड, ऑल ऑफ दीज. देखो, गुड लीविंग ग्रुप्स आर फेवर्ड फॉर एवरीथिंग. सो आंसर इधर C और D, राइट? C तो है ही, या D भी हो सकता है. D को कैसे देखेंगे? देखो, E1 talks about the rate. Okay, unimolecular, and yes, definitely 2-step hai. This makes sense. First you get a carbocation, that's the RDS. Oops, RBS likha tha. Dyslexia kicking in. Second step is base, abstraction of beta proton, right? This is step 1. Step 2,
ये हो गया सही. Rearrangement, yes, because carbocation rearrangement possible. So yeah, let's go with all of these. Let's go with all of these. Good evening, Gudiya. Yes, Ram ji, बिल्कुल सही बोला आपने. Thank you for that answer. Absolutely simple one. How about this one? This is an interesting question. कौन सा alkyl chloride उल्टा, going backward, trying to figure out कि कौन सा substance actually ये हमको प्रोडक्ट देता है. ओके, रिमेंबर दैट सिडजेफ रूल, हॉफमैन रूल, वो सब चीज हमने बात की थी. कौन सा alkyl fluoride would yield the following pure alkene on reaction with alcoholic KOH? अब मैंने आपको दो हिंट ऑलरेडी दे दिए हैं. एक हिंट तो अभी मैंने बोला, alcoholic KOH लिखा है. alcoholic KOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि E1 मैकेनिज्म. E2 अभी तो हमने E1 कह रहा, E2 मैकेनिज्म लिख रहा था. E2 पता नहीं दिमाग में E1 था. Just maybe because just with that. What is alcoholic KOH? Alcohol is say CH3OH or C2H5OH or whatever, anything with an OH group. ठीक है. KOH डालने से क्या होगा? KOH डालने से ये होगा कि ये K plus OH minus will be like, hey, you know what? Let's get these out of here. So this takes away this H. ये इसके साथ बन जाता है पानी. And what you get is CH3O minus K plus. This is your strong base. ठीक है. बार बार मैं इसको बहुत बार रिपीट कर चुका हूं. And the reason I'm doing this is because students sometimes forget that alcoholic KOH is same as that. Okay, cool. With that out of the way, E2 mechanism में होता क्या है? It's a one-step reaction, bimolecular, मतलब कि it depends on concentration of substrate as well as this KOH guy right here. Okay, so what do we start with? Okay, well, okay, it is a 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4-membered carbon and एक substitute, methyl substituted butane, right? 2-methyl butane. उसके बाद I can have two cases. Case 1 is chlorine इस पे लगा हुआ, ठीक है? इस पे लगा हुआ नहीं, इस पे नहीं लगाना है, हमको बॉन्ड बनाना है इधर एंड इसके बीच में, राइट? So I can have chlorine either here or I can have chlorine over here. These are my two cases, right? Because the end goal is to get a bond here. हमको bond बनाना है यहाँ पे, right? This is the double bond that is needed. So this is the way you would go about doing this. कौन सा चैप्टर का MCQ है? गुड़िया बाकी बात समझा नहीं. Haloalkanes नाम लिखा है ना बड़ा बड़ा. Part 5, Haloalkanes, Haloarenes, 12th standard. Yeah. This is not an MCQ, this is a subjective question. So, इन दोनों में से कौन सा होगा? Anybody on the chat who wants to help me out with this? Out of both of these, which one do you think is most relevant? And फर्क पड़ता है क्या? दोनों हो सकते हैं. Let's see. तो ये तो मैंने सफेद बॉन्ड बना दिया है, but just to show you कि बॉन्ड यहाँ बनेगा. Okay. Doesn't matter. Okay. Now let's try and backtrack it. ठीक है, ये मैं दोनों चीज ठीक से बना देता हूं इसको. There are two options. Okay. तो the bond is going to get formed between 1 and 2. 1 and 2 मैंने क्यों लिखा है? Because in this case, this position 1 is going to be the beta elimination वाला position, right? मतलब ये हाइड्रोजन जो है निकलेगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा. Okay, cool. What about this case? यहां पे ये भाई साहब हो जाएंगे बीटा पोजिशन, राइट? And what I have to get rid of is H and Cl यहाँ पे. Which one do you think is more likely? आपको क्या लगता है? देखिए, now here is where things get interesting. अगर मैंने ये वाला लगाया, if I choose one, then the more likely product is this. कि bond बनेगा, फिर से मुझे करने की जरूरत नहीं. I think that the bond should just get formed over here. Let's use this yellow color to show the bond. Bond यहाँ बनेगा, and this goes away, this goes away. यहां क्यों बनेगा? This is the Z. Z क्या लिख रहे हैं हम लोग? Z product, right? More substituted, less substituted कब बनता है? जब स्टीयरिकली हिंडेड हो. दिस इज नॉट स्टीयरिकली हिंडेड, ठीक है, श्योर लुक्स अ लिटिल बिट हिंडेड, बट क्लोरीन तो निकल रहा है ना. हम लोग बगल वाले की बात कर रहे हैं. क्लोरीन के नेक्स्ट वाला क्या है? हाइड्रोजन निकलना है. क्लोरीन में भी लिटिल स्टीयरिकली हिंडेड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ये प्रोटॉन. इसकी बात अगर बेस है स्टीयरिकली हिंडेड, बेस तो कुछ नहीं है, जस्ट अल्कोहलिक KOH, ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये वाला चीज लें, then you will get the double bond over here, but you need a double bond here and not here, इधर नहीं, which is why this should be the answer.
Okay, this is the logic as to why this compound is the answer. अब इस compound का नाम क्या है? We can name it. Let's go ahead and name it. Let's call it chlorobutane. Okay, sure, methyl भी है. ठीक है. Chloro, 1 chloro, 2 methyl butane. Does that sound good? This is A. Cool question, right? Makes you think. Now with this, pretty much finished everything to do with E2 reactions. E1 भी करेंगे, E1 भी थोड़ा बहुत किया है, ठीक है? So just recapping everything we've done so far. Alcoholic QH है, मतलब this is E2. Okay, first step. Okay, और इसको backtrack करके draw the basic structure पहले. कि देखो ये 4 कार्बन वाला हो गया, एक substituent हो गया. Okay, then I can have chlorine either here or here. You decipher कि chlorine either लगेगा यहाँ पे या फिर लगेगा यहाँ पे, because the double bond has to be made here. ठीक है, either here or here, position 1 or position 2. Let's not number them with 1 and 2, that will get confused. There are too many 1s and 2s. या तो यहाँ या तो यहाँ. फिर after that how do we decide कहाँ होगा? अगर हमने यहाँ बनाया then double bond would get formed here. अगर यहाँ बनाया then the double bond would get formed here. So which is why we chose this as the right answer, and this is it. Any doubts on this? Guria has retracted their message. Okay, cool. Are you good over here? ये ठीक लग रहा है? Is this fine? I understand that this could be a little bit challenging at times, right? This could be like, यार थोड़ा मुश्किल है, but it's okay. This topic is very easy when it comes to JEE and NEET. पढ़ने में थोड़ा time और थोड़ा effort लगता है because SN1, SN2, E1, E2 seem like that they're very similar, but don't worry. ठीक है. Next question. E2 reaction में intermediate क्या होगा? What is E2 reaction? E2 reaction अभी तो देखा हम लोगों ने. Intermediate क्या होता है E2 reaction बताइए? विशाल लगता है थोड़ा जल्दी आ गए थे क्लास के लिए. What is the intermediate of E2 reaction? E2 reaction में कोई intermediate होता ही नहीं है. Let's just mark that and move on. Yeah, it's E1 that has the intermediate, which is a carbocation intermediate, right? This is a trick question, I guess. This was in a NEET question. NEET में आया था. किस NEET में आया था एक बार देखता हूँ मैं. 1 second. 38 is the slide, right? 1 minute. 38. This. Oh, I can't find it. Okay. Anyway, it's one step. No intermediate. This is the answer. Simple one. Free radical. They're all distractor options. This is the answer. Next one. इसमें से कौन सा cannot go undergo E2 reaction? Oh, this is a fun question. इसमें से कौन सा cannot undergo E2 reaction? E2 के लिए हमको कार्बोकेटायन बनना चाहिए. कार्बोकेटायन कहां पे नहीं बन सकता है? कहां पे नहीं बन सकता है? हाँ, that's interesting. Okay, दो स्टेप होते हैं ना. Step 1 is carbocation. Step 2, this is RDS, which is the, let's just call it C+. Okay, समझ जाइए आप लोग. कार्बोकेटायन. दूसरा क्या है? बीटा एलिमिनेशन. तो दो चीजें हैं. अच्छा, तो मतलब दे मस्ट बी अ हाइड्रोजन एट द बीटा पोजीशन. दैट इज अनदर टेस्ट. हाँ, एक चीज है कि कार्बोकेटायन बनना चाहिए आसानी से. दूसरी चीज ये है कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए. देखते हैं. कार्बोकेटायन सब जगह बन सकता है. इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है. So that was not helpful. What about the second step? Beta position पे हाइड्रोजन होना. Oh, that's interesting. Beta position मतलब यहाँ पे इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है. What about this one? Oh, that's scary. इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं. Okay, I'm going to just write no hydrogen. No hydrogen. Oh yeah, plenty of hydrogen. You got 1, 2, 3 maximum effort. Okay, यहाँ possible है. This is possible. This is interesting, right? You would say Sage-F product and all, but ठीक है, but there's no other option. It cannot form that. Double bond has to be formed over here. Okay, cool. Look at this option. C option में देखो, there is no beta hydrogen. Hence C is the answer. It cannot undergo E2 reaction. In fact, कुछ और हो सकता है क्या? Maybe this plus charge looks like it's on this. It's not. It's on this right here. क्या कर सकते हैं? I don't know. This cannot undergo E2 reaction. Maybe just a substitution reaction instead, because E2, this is another thing. Huh? By the way, मैं सारे conditions दे दूं, and even if they are favorable, but E2 हो ही नहीं सकता है, then maybe it'll undergo SN2. This has come
in JEE in the past, and NEET में direct questions have been coming these days, but this is a pretty cool question that way. This, hold on, I'm quite confident again that this is, oh okay, no, not a PYQ, मुझे लगा PYQ था. खैर, anyway, this definitely forms, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही 1, 2, और जब ये चला जाएगा तो you'll have a nice and neat benzene बन जाएगा. Benzene is the product which is amazing, really stable. So yeah, we're good here. We're good on D. So not B, not A, not D. The answer is going to be C. Pretty cool, right? राम जी, अभी तो बताया मैंने, वही तो डिटेल तो बता रहा था. हाउ C? राम जी, क्या पार्ट नहीं समझ में आया? मैंने बताया ना, ठीक है. Let me recap this. Which of these can't undergo E2 reaction? E2 reaction के दो कंडीशन मेरे सर के ऊपर लिखी हुई हैं. पहला, एक कार्बोकैटायन बनना चाहिए. दूसरा, कि बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए. अगर बीटा हाइड्रोजन है तभी तो एलिमिनेट होगा. बीटा मतलब जहां पे हैलोजन है उसके बगल वाले कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन, और उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए. तो कार्बोकैटायन तो सब में बन रहे थे, हमने देखा, राइट? सो दैट इज चेक्ड ऑफ, दिस इज डन. बट द सेकंड कंडीशन, बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं, मुझे दो जगह दिखा जहां बीटा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, लेट मी कॉल दिस, यहां पे भी लिख देते हैं नो बीटा हाइड्रोजन. इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है. बट चक्कर ये है कि इधर नहीं है, ऑप्शन बी, फिर भी यहां पे तो है, इसमें है बीटा हाइड्रोजन. यस, इसमें है. ठीक है, ऑन द अदर कार्बन इसमें है, बट दिस गाय हैज जस्ट एक्सेस टू वन कार्बन. अगर यहां पे प्लस चार्ज कार्बोकैटायन बन गया, बगल वाला ये हो गया, दिस इज द बीटा पोजीशन. सो अगर इसको हम लोग अल्फा बोले, दिस इज द बीटा पोजीशन. देयर आर नो बीटा हाइड्रोजन्स. सिंस बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां एलिमिनेशन नहीं हो सकता है. अगर कंडीशंस कुछ भी करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. कूल क्वेश्चन, राइट? आर यू गुड, राम जी? चलेगा? Shall we move on? Let me know if you still have a doubt. And by the way, if you're not watching this live, you लग रहा है कि इसमें कुछ मुश्किल हो रही है on this topic, anything around this, go to the Discord channel that I run, go to the Telegram channel that I run, ask as many doubts as you like. Where are they? Bento links, वहां जाइए. ठीक है? What is the bento? bento.me/iteachchem. Those links are in the description as well as in the pinned comments over here. All right, sweet. आगे बढ़ते हैं. Oh, this is a fun question. इसमें से कितने एल्कीन्स बन सकते हैं? यहां पे तो लग रहा है कि कार्बोकैटायन बनेगा. नहीं, अल्कोहलिक की वजह, फिर से यार अल्कोहलिक की, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस फिर से लग रहा है. ये भी E2 हो गया. बहुत सवाल हम लोग सिर्फ E2 पे कर रहे हैं. चलो करते हैं, नो प्रॉब्लम. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन्स इन द गिवन एलिमिनेशन रिएक्शन इज, एलिमिनेशन डेफिनेटली हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया था कि सेट्जेफ प्रोडक्ट होता है, बट दैट्स द मेजर प्रोडक्ट. माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है. इसमें देखिए, दो तरफ कार्बोकैटायन, नहीं सॉरी, दो तरफ बीटा हाइड्रोजन है, राइट? कार्बोकैटायन बनेगा यहां पे. ठीक है, कार्बोकैटायन न भी बने, कार्बोकैटायन बन रहा है क्या? E2 कर रहे हैं ना. डिड आई टॉक अबाउट कार्बोकैटायन देयर? E2 वाज हियर. ओह माय बैड. वी डिड दिस अकॉर्डिंग टू E2. या आई रियलाइज दैट मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन E1 के हिसाब से किया, but even with the E2, let's skip the whole, I'm sorry about that, let's skip this rate determining step. इसमें सिर्फ बीटा एलिमिनेशन करो, फिर भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा. ठीक है, apologies for the कार्बोकैटायन वाला बिजनेस. I misread the question. Just a quick addendum to this. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया with respect to E1, but E2 भी नहीं होगा. ठीक है, on this, because there is no कार्बोकैटायन formation. E2 is just a direct one step reaction. उसमें भी नहीं होगा, because even that requires a beta hydrogen, right? Beta elimination is the one and only step. ठीक है, एक step हो रहा है. Apologies for that. Yeah. Anyway, or we'll just change the question to E1. No, either way it doesn't work out. E1 और E2 दोनों नहीं होंगे because beta hydrogen नहीं है. Yeah, I hope that's okay. All right, cool. Yeah, I just realized ये वाला भी E2 था, उसमें भी E2 था. खैर, okay, one step reaction. ब्रोमीन हट जा रहा है. ब्रोमीन हट जाके क्या आ रहा है? ब्रोमीन हट रहा है, एंड इधर जो हाइड्रोजन है, इधर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर है. ठीक है, so from here hydrogens can also go away. Okay, cool. So one of this is a major product, the other one is a minor product. ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सेट्जेफ रूल के हिसाब से, मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर so that you don't get confused. This is going to be the major product. और minor product भी बनेगा, तो दो should be the answer, एक major एक minor. ये पहले मैंने minor product बना दिया है. ठीक है, this is the minor product and this is the major product. ठीक है, now things get interesting. Stereochemistry किसको याद है here? This is major, this is minor. No doubt here, right? This is the Sadzev product.
सो इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन पे डबल बॉन्ड बन जाता है। ओके, दो इज द आंसर 2, बी केयरफुल हियर, द आंसर इज नॉट 2, इट्स मोर देन 2। व्हाई? बिकॉज देखो यहां पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, so there is no concept of cis trans isomerism. Look, when you have a double bond being formed, there is a possibility of cis trans isomerism. They are different compounds. इसका मतलब है यहां पे हाइड्रोजन लगा है, यहां पे हाइड्रोजन लगा है. This is the trans product. I can also make a cis product. Let's do that. Here is your cis product. Is this a cis product? Hold on, let me think this through. इधर H ऊपर था. Oh, yeah, this is a cis product. इधर H नीचे है, इधर भी H नीचे है. Cool. Yeah, this is the cis product, this is the trans product. Okay, cool. Yeah, ये major है because of the Sadzeff rule. This is minor. So you got 3 as the answer. ठीक है? Whenever you get question like this. So यहाँ पे हम लोग जो geometrical isomerism है उसको यूज कर रहे हैं. Stereo isomerism भी यूज करते हैं. When you do substitution reactions, chiral center है तब stereo isomerism की बात होती है. If you have elimination reaction, then you've got double bonds. Then you have to consider this cis-trans isomerism. Cis-trans isomerism क्या है, क्यों है? I can do some practice sessions if you guys like. Let me know in the comments or something. नहीं बताना कि hey, I want some practice in stereochemistry. I don't remember it from 11th grade or I haven't studied it. I'll do it. But if you want to check out the theory, go again to the bento link और वहां जाके आप stereochemistry के सारे sessions देख सकते हैं. I've done them last year. All right, let's move on from this. So answer to this is a nice big 3. इवन रिएक्शन की बाय द वे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? वेल, इवन में कार्बोकैटायन बन रहा है. ओके, कूल. बट हियर अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कहानी मैंने इसलिए बताई पूरा क्वेश्चन करके याद दिलाने के लिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो यूजुअली ट्रांस एल्कीन्स आर लोअर इन एनर्जी देन सिस एल्कीन्स, हेंस ये ज्यादा बनते हैं. अब लोअर एनर्जी क्यों? देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री. अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे देन यू विल डू दैट मोर देयर. I'm giving a little bit extra information over and above what you need for JEE Main and NEET. अगर कोई JEE Advanced ले पढ़ाई कर रहा है उसके लिए पढ़ सकता है ये, but you don't necessarily need it. There are symmetry operations. Okay. Symmetry की spelling क्या है? रुको. Symmetry operations ज़्यादा है. More. What do I mean by symmetry operations? Again, this is a mathematical concept. Symmetry. If I've got, say, circle that has infinite symmetry, right? If I have a square, it has many planes of symmetry. They're all symmetrical figures. Okay, great. Now, if I put this sort of a figure, यहाँ पे एक 6-sided figure है, एक जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. Say this is a benzene ring. Okay. एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है. That's great. Lot of symmetry. Here, no symmetry. Okay. This is a brief idea of what I mean by symmetry. Again, if you want details, go to stereochemistry and all of that जो मैंने सेशंस किए हैं. जनरल आइडिया है कि ट्रांस एल्कीन्स हैव मोर सिमेट्री ऑपरेशंस, मतलब कि आई कैन हैव मोर एक्सेस ऑफ सिमेट्री इफ आई हैव अ ट्रांस एल्कीन. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वर्जन सेंटर. 10 चीजें होती हैं, बट जस्ट टेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट राइट नाउ कि ट्रांस एल्कीन्स आर मोर फेवरेबल टू बी मेड एज कंपेयर्ड टू सिस एल्कीन्स. ठीक है, and because substituents are farther away from each other, so even reactions they will favor the formation of trans alkenes. So यहां पे अगर ये रिएक्शन बन रहा है E1 स्पेसिफिकली, नॉट E2 बिकॉज ऑफ Sadzeff रूल. Sadzeff रूल की वजह से वो वाला मैंने बताया था मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कौन सा होता है. ठीक है, एंड you will get equal amounts of in case of E2 reaction you will get a same number of cis and trans, but in case of E1 which is similar to SN1 you get more of the trans product and less of the cis product. ठीक है, cool. Again, what are the reaction conditions? हमेशा लिखना चाहिए weak base and heat. And what are we doing? We are doing E1 reactions. ठीक है, cool. We good? All right. So here's a recap of everything E1 reactions. Yeah, it's unimolecular. मतलब कि the rate only depends on where's the rate thing? Yeah, rate only depends on the substrate. Substrate क्या है? Haloalkane. Okay. Reactivity tertiary greater than secondary greater. Primary because of carbocation stability. Benzylic is more stable. Weak base चाहिए. What kind of weak base? CH3OH, the nice weak base. 2-step reaction है. पहले बनता है कार्बोकैटायन, उसके बाद होता है जो बेस का abstraction of proton. Okay. Polar protic solvent is great because that stabilizes the carbocation. कहाँ है कार्बोकैटायन? लिख देते हैं कार्बोकैटायन.
stabilizes. Okay, cool. And generally follows Sitzer rule. Also, last thing, trans more than cis. If अगर ऐसा बना, जैसे कि हम लोग कायरलिटी की बात करते हैं ना, अगर ऐसा सिचुएशन है कायरल कार्बन एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि रेसिप्रोक मिक्सचर होता है एंड ऑल दैट इन केस ऑफ SN1. E1 में हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांस, और उसमें भी बोलते हैं कि थोड़ा सा जो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हो जाता है. इन दिस केस ट्रांस इज मोर देन सिस बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस. कूल. क्विक क्वेश्चन. Elimination reaction of 2-bromopentane to form pen2-ene is what? Which of these options? And it's थोड़ा complicated हो जा रहा है because एक से ज्यादा सही हो सकता है. This looks like a JEE advanced question, right? Because you've got so many things. It's not just a simple single correct answer. It's got a lot of things over here. So कैसे करेंगे इसको? What do you think? Please try this out. This is from NEET 2020. Not too far ago, just 4 साल पहले नीट में आया था. आजकल I think NEET is a lot easier. We can do this, don't worry. Elimination reaction of 2-bromopentane. Okay, let's draw bromopentane. 1, 2, 3, 4, 5. 2-bromopentane. And what does this form? Pent2-ene. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. ये तो pent1-ene हो गया. हम लोग बना रहे pent2-ene. Okay. All right, great. So looks like यहां वाला जो हाइड्रोजन है उसको निकाल रहे हैं. Oh, that makes sense. This is more substituted. Okay. So, all right. More substituted. Okay. More substituted. A lot of T's there, aren't there? तो ये Sitzer rule को follow कर रहा है. More substituted. That's cool. Beta elimination. Yeah, absolutely. This is the beta hydrogen that gets removed. Or eliminated. Let's not write remove. Same शब्द यूज करते हैं जो बुक में है आपके. Eliminated. Sweet. Dehydrohalogenation, absolutely. HBr. Yeah, gives me plus HBr. So this is D. I'm just going to point it over here. Easier that way. Okay. Dehydration? No. Dehydration tab hota agar if I had OH and H being removed. कोई possible है. Perhaps we will revisit this जब हम लोग alcohols phenol ethers करते हैं. Maybe it'll pop up over there. अभी के लिए it's dehydrohalogenation. If it's dehydrohalogenation, it cannot be dehydration. So A, B and C मेरे हिसाब से सही होने चाहिए. छोटू जी, good try, but dehydration क्यों छोटू जी? Dehydration तो नहीं है. With just that logic of dehydration नहीं है. D गया. देखो, elimination से we got the answer to the question जो एलिमिनेशन की बात कर रहा है. सो लुक एट दैट. रियली अगर आप टेस्ट में हैं तो इतना मुश्किल सवाल नहीं है. ठीक है, इतना जो है आपको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन यू जस्ट नो कि भाई ब्रोमीन निकल रहा है. अगर ब्रोमीन निकल रहा है डिहाइड्रेशन कहां से हुआ, तो डिहाइड्रेशन को आप हटा दो. उसको हटा दिया देन ऑटोमेटिकली यू कैंसिल आउट बी सी एंड डी एंड यू गेट ए इज द आंसर. खत्म. छोटू साहब, वी गुड? कोई डाउट है तो प्लीज बता दो दोस्त. Yeah, since you made the effort of being here live, देखना. Yeah, Chotu, everybody else, this is all right. Answer is option A. Let's move on. So, on to the second part of the session, which will discuss elimination versus substitution. इन दोनों को compare करें, contrast करें, तो क्या करें? देखो, ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल बेस होता है, पर बेस का न्यूक्लियोफाइल होना हर समय जरूरी. व्हाट? दैट्स इंटरेस्टिंग. इट सेज हियर ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर पोटेंशियल बेसिस. अदर वे अराउंड. बेसिस आर ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी बेसिस, कांट बी बेसिस, डिपेंड्स, राइट? ठीक है. बेस का कॉन्सेप्ट होता है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन. दैट मे नॉट ऑलवेज बी नेसेसरी फॉर अ न्यूक्लियोफाइल, बट बेस हमेशा करता है. बट अगर बेस है तो उसके पास it can behave as a nucleophile for sure because it has electrons. Anyway, the main idea is कि unshared electron pair से हम लोग deal कर रहे हैं. That is what causes the reactivity and causes elimination and substitution reactions. Yeah. So substitution reactions और elimination में main फर्क होता है this guy, heat. Okay. And they usually compete with each other. So मैं आपको already बता चुका हूँ, but we're just putting it down in one place. So what is competing? It is SN2 versus E2 और SN1 versus E1. इन दोनों का competition है.
Can you hear that noise? There's a bit of a noise. There's a bit of a noise because power gayi hai. If you can hear it, tell me. I'll shut off some things. If you can't hear it, then doesn't matter. We'll continue doing whatever we're doing. It doesn't bug me, but there's like a noise because UPS चल रहा है. Let me know. खैर, so जो कंडीशंस SN2 को फेवर करती हैं वो E2 को भी फेवर करती हैं. सिमिलरली SN1 को जो फेवर करती है वो E1 को भी फेवर करती है. तो हाउ विल यू डिसाइड भाई होगा क्या? प्राइमरीली हीट और भी एक दो चीजें वी विल डिस्कस देम राइट नाउ. सो SN2 वर्सेस E2 पहले देखते हैं. SN2 E2 पहले हमने SN2 पढ़ा था ना, वन स्टेप रिएक्शन, rate depends on concentration of substrate as well as that of base. और SN2 के केस में हमने देखा था, देखो आप जो सॉल्वेंट लेंगे that should be aprotic, है ना, पोलर बट aprotic, DMSO हमने लिया था. क्यों? ताकि न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट ना हो, आसानी से अटैक कर पाए. रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? ठीक है. E2 तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, यू मे रिमेंबर दिस ऑलरेडी. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और अ बेस. ठीक है, कूल. Nucleophile attacks the carbon bearing the leaving group and leads to substitution. Base यहां पे अटैक करता है और बीटा हाइड्रोजन एटम को निकालता है. अब सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां पे ऑर्डर उल्टा है, यहां पे ऑर्डर है ये. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू मस्ट कीप इन माइंड. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. देखो यहां एलिमिनेशन विद E2 एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन विद SN2, और कलर्स भी ऐसे यहां पे लगाए गए हैं. तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो बेस हाइड्रोजन को निकाल देगा, अगर ये हुआ तो हो गया एलिमिनेशन. ठीक है. और इफ द न्यूक्लियोफाइल इज क्विक इनफ एंड इट pushes out this leaving group, this is SN2. These are the two possibilities, possibility 1, possibility 2. ठीक है, this is what it is. Now how will you decide कि क्या होगा? अगर if your substrate is sterically hindered, then SN2 नहीं होगा. ठीक है, अगर sterically hindered है, that's not good. टेम्परेचर तो मैं बता दिया आपको ऑलरेडी. साइज ऑफ बेस न्यूक्लियोफाइल, तीन चीजें. ठीक है, पहली चीज देखते हैं. Let's explore it in a little bit more detail. Primary halide है and base is strong, unhindered, like ethoxide ion. तब substitution ही होगा, है ना. Ethoxide ion मतलब C2H5O-, मतलब you got a strong base है. ठीक है, but there's no water or anything, ये सब नहीं है. ठीक है, and substitution is highly favored because base आसानी से कार्बन को it can push out the leaving group. This is Lg, इसको निकाल सकता है. तो मतलब कि स्टेरिकली अनहिंडर्ड है. अनहिंडर्ड मतलब कि छोटा सा है. इट्स नॉट. गिव मी अ सेकंड. थिंक समथिंग इज अबाउट टू डाई. ओह ग्रेट, लुक एट दैट. दैट बीप बीप कर रहा था एंड द पावर जस्ट केम बैक. बैंगलोर इज वियर्ड मैन. एनीवे, दैट वाज फनी. खैर, where were we? Yeah, substitution ज्यादा फेवर्ड है अगर स्टेरिकली अनहिंडर्ड बेस है तो. ठीक है, सबस्ट्रेट अगर स्टेरिकली अनहिंडर्ड है and base भी strong है. ठीक है, cool. So here is an example. ठीक है, this is a cool example. Strong base and kind of hot, right? 55 degrees, not really hot but kind of hot. So these are conditions. इसमें क्या होता है कि ये ETO- डायरेक्टली अटैक करता है एंड Br को पुश आउट कर देता है. Because it does that, what you get is, इसको क्या बोलते हैं? Ether. हाँ, this is called an ether, which is crazy. Really, you get an ether? Yeah, you get an ether. Maximum जो है majority product आपको ether मिलता है और बहुत थोड़ा सा आपको elimination product मिलता है E2. ठीक है. Now, if I instead of a primary, I take a secondary halide. Secondary halide ले लिया and a strong base, that will prefer elimination because mainly steric hindrance होता है. तो substrate के साथ it's hard for the base to go to the substrate to push out that leaving group. Now it's mainly the substrate, it's mainly an E2 product. Dekho, this is a secondary carbon, right? This right here. For E2 ETO- to attack from here is difficult, which is why you get a minor SN2 product. And mostly, chalo yaar, instead I'll use a different color here. This goes and यहाँ पे हाइड्रोजन है. like चलो हम we'll chill, let's get out of here, right? This is favored and you get me to this. ठीक है, that's why this happens. अगर टर्शरी है तो कोई सवाल ही नहीं है.
If it's tertiary, it is definitely going to go elimination and you'll get very, very tiny amounts of this. Okay. And again, remember in all three cases, your SN2 product is an ether. यहाँ पे भी ether बन रहा है. Ether, what is ether? ROR dash. This is ether. ठीक है? I know we haven't studied alcohol, fuel, ether, but come on, ये सब आप तो जानते हैं पहले समय से. Apologies, I thought मेरा phone silent पे था. Oh God, man, so much spam, so much spam, so much spam. Yeah, cool. ठीक है? Any doubts here? Are we good? Just give me a quick thumbs up. You'll notice one weird thing that happened here. एक चीज आपने नोटिस की, मैंने बोला नहीं एक्सप्लिसिटली, बट वील लुक एट दैट एज वेल. टेम्परेचर यहाँ था 55 डिग्री सेल्सियस, पहले वाले में भी था 55 डिग्री सेल्सियस. अब टर्शरी भाई साहब को देखो, टर्शरी इज लाइक कि ब्रो इवन एट रूम टेम्परेचर आई विल स्टिल प्रेफर टू गो एंड एलिमिनेट इवन एट रूम टेम्परेचर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. अगेन क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जस्ट फॉर अगर इफ यू हैव लॉस्ट यू नो ट्रेन ऑफ थॉट, कभी कभी ऐसा होता है. व्हाट आर वी कंपेयरिंग? वी आर कंपेयरिंग SN1, SN2 है भाई, SN2 versus E2. So what is happening here? Anyway, SN2 versus E2. But is it SN2 or is it SN1? Interestingly, is this a typo or is this correct? ये SN1 क्यों लिखा है? Any inputs? Why do you think SN2 लिखा है? SN1 लिखा है? Anyone wants to take that? SN1 क्यों लिखा है? It's not a typo. It's absolutely correct actually. What are we comparing? What? SN1? Why SN1? Why not? We were doing SN2 versus E2. Why did I say SN? Okay. देखो, थोड़ा बहुत याद है. When we did SN2, मैंने कुछ relative rates आपको दिखाए थे. याद है क्या? SN2 में हमने बोला था कि primary greater than secondary greater than tertiary. और rates was around, relative rate was around 11. This was around 0. This was some really ridiculously large number. SN1, however, उल्टा था, tertiary greater than secondary greater than primary. This is why although मैंने कुछ यहाँ पे देखो कुछ कर दिया, बहुत चीजें की है, strong base ये बहुत फलाना चीजें की हैं, even with all of that it's like bro SN2 नहीं होगा because it's tertiary. You see that the relative rate is 0. This is why it says SN1. This is not a typo. This is not a typo. It is SN1 minor product. क्योंकि you first get क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बनता है क्या? हाँ, कार्बोकैटायन बनता है ना, कार्बोकैटायन बनता है. Okay, and you have what kind of carbocation? Let me show you quickly. You get this as a carbocation, yeah, and then you have your awesome base coming in. You know what? I'll save the day. You have C2H5. अरे ठीक से लिखते हैं इसको. Let's do this way. C2H5 O minus, and then these guys interact, and you get your awesome ether, which looks like this, which is your product. Cool. This is a SN1 reaction. There's a RDS, etc., etc. Madhav, did I owe you some books? मैं आपको कोई books भेजने वाला था क्या? If you want to talk about what we're doing here, you're most welcome to do so. Otherwise, I'm not going to be able to address anything outside of what we're talking about here. ठीक है? If you're talking about Aakash ke books, go to your portal. You should be able to do everything online. Yeah, you'll have access to your online books. Temperature का simple है. Yeah, we did a lot of awesome. बहुत detail में हमने कर लिया. If you're preparing for JEE, NEET or advanced, you're sorted, bro. Either way, with that input. Okay, FA simple है. Temperature बढ़ाओगे तो it'll favor elimination. ठीक है, simple side. Everything is straightforward. Size of base और nucleophile. अगर nucleophile बड़ा है, then it's going to prefer E2, not E1. So here's the deal, right? If you've got a strong sterically hindered base, such as say a tertiary butyl ion, it prefers an elimination reaction. No substitution, because substitution के लिए हम लोग को चाहिए कि nucleophile आराम से attack कर पाए. But अगर बहुत बड़ा सा nucleophile, it's not going to attack. It's going to be like, bro, you know what? I will just take the proton. I'll be happy. I don't want to go and attack a substrate. I'm happy just taking the proton. That's what's happening here. Okay, so this is a unhindered small base or a nucleophile. So here, like, okay, it's mostly substitution. Look at that. Okay, but not elimination. As soon as you change it up to here, tertiary butoxide, right? And temperature is still not very high. Look at that. How the tables have turned. Yeah. देखो, फर्क क्या है? CH3ONA and this.
all I'm doing is changing the size of base on nucleophile. My substrate is the same. Okay, same substrate. Focus here. Focus here. ठीक है, cool. Are you all right with this? अगर बड़ा न्यूक्लियोफाइल बेस है तो elimination reaction what is favored. What about SN1 versus E1? We'll quickly do this. This is much easier than E2 and SN2. यहाँ पे the main thing is कि कार्बोकेटायन बन रहा है. कार्बोकेटायन बनने के बाद you can have rearrangement and all of that, and the factors are very similar. Yeah, the main difference them being heat, and the goal is to have a weak base and polar protic solvents. I gave you an exception जब वहां पे SN2 हो ही नहीं सकता था तब SN1 हुआ था. I gave you an example there. But usually if you're doing simple things where you're comparing SN1 and E1, you increase the temperature and you have a polar protic solvent and a weak base, it prefers either SN1 and E or E1. But अगर heat ज्यादा करोगे तो E1 elimination. Okay, so to put all of that together, अगर methyl है तो it is going to go like you know what, methyl group सिर्फ SN2 करेगा. Is chill, is primary. It's not. Now we're doing all of them. Now we're comparing all SN1, SN2, E1, E2. यही तो फोकस था हमारा. ठीक है. प्राइमरी का क्या? व्हाट अबाउट प्राइमरी अल्काइल हाइड? वेल मेनली SN2. अगर हिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस है तब E2 देता है. हिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब लाइक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, है ना? यहाँ पे यही चीज है. दिस इज द सेम थिंग. देन इट गिव्स E2. Okay, cool. What about secondary? Secondary can go, is interesting. Secondary is mainly SN2 with weak bases, okay, and mainly E2 with strong bases, okay, okay. Tertiary, no SN2. This is extremely important. Tertiary कभी भी SN2 नहीं देगा. It can go SN1, E1 depending on temperatures. अगर temperature कम है तो SN1, और अगर strong base use हुआ तो E2 dominate करेगा. And again, E1 and E2 are only possible if there is a beta hydrogen present. अगर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं तब तो नहीं होगा ये. Keep that in mind. I've done a question of that as well. Is that a bit too much? I understand that this theory gets to be a little bit much, so let's do a couple of questions. इनमें से कौन सा mechanism has a different reactivity order of alkyl halides than the others? This is important. इनमें से कौन सा has a different reactivity order? मतलब कि कुछ में है this and कुछ में है ये. Which one do you think matches with this? Which one? किस में होता है? What do you think? सोच के बताइए. Elimination is always tertiary greater than secondary greater than primary. अभी हमने just किया है. SN1 also is this, so the odd person out is SN2, क्योंकि SN2 prefers primary, then secondary, then tertiary. क्यों? Because अगर substrate यानी कि alkyl halide is not, it's like it's chill, it's not stereochemically hindered, आराम से nucleophile attack करेगा. So SN2 would prefer to do 1, then 2, then 3, primary, secondary, tertiary. That's the answer to this one. But yeah, the last part of this, it's B. Ramji, B होगा, not A. Yeah, A is also tertiary greater than secondary greater than primary because of carbo-cation, which is the same as E1 and E2. This guy is the ulta order, primary greater than secondary greater than tertiary. मैंने just to be explain किया है. Last part 2 मिनट लेंगे इसको बारे में बात करने में. Reaction of metals, we'll do this part today. Grignard आज करेंगे, ये Woods reaction अगली बार कर लेंगे. Grignard reagent is awesome. It's crazy, right? Grignard reagent is a metal like say magnesium. Yeah, magnesium reacts with carbon, which is magnets, right? So magnesium has, let's see what happens. RMgX is a Grignard reagent. Grignard बोलते हैं कुछ लोग, Grignard बोलते हैं, जैसा आपको pronounce करना हो, right? Whatever you like. I'll say Grignard so that everybody understands what I'm saying. If I keep saying Grignard, you'll be like, what the hell is the guy talking about? Like, कहाँ से आया? That's fine. Like the pronunciation of BETA is beta and not beta. But I say beta because that's what everybody else understands easily. So I will say Grignard. The actual pronunciation is Grignard reagent. It's harder to say, so Grignard it is. Okay, so Grignard reagents are prepared by the reaction of organic halide with magnesium metal and anhydrous ether solvent. Anhydrous ether solvent. ठीक है, देखते हैं क्यों, how, why, what and where. Okay, so I've got RX जो मेरे पास haloalkane है, उसके साथ में react कर रहा हूँ magnesium.
And once I do that, it forms this crazy thing. Literally this. What is this? This is my dry ether. Dry लिखना जरूरी है. Dry क्यों? मतलब पानी नहीं. अगर पानी होता ना तुरंत alcohol बन जाएगा. We don't want alcohol. We do not want alcohol in the mix. Right? पानी इस वजह से alcohol बन जाएगा. I'll show you how and why. Anyway. So interestingly, magnesium is highly electropositive, right? But the bond between this and this is covalent. Just like what? Yeah, this covalent. This one's ionic. That one's covalent. What is even happening here? I know, sounds a little random, right? But this is what makes it so fascinating. This is what makes it fascinating. Slightly positive charge, slightly negative charge. अब इसके बाद क्या करेंगे? These are extremely strong bases. Bases. Okay. So they react with base का मतलब क्या है? Base मतलब abstracts hydrogen. मतलब हाइड्रोजन आसानी से निकाल लेगा. अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम है connected to an electronegative atom such as oxygen, nitrogen और sulfur. इसका मतलब क्या हुआ? OH, SH, NH. अब NH3 भी हो सकता है. NH3 में से एक H निकाल लो, है ना? तो इन तीनों में से बेसिकली मैग्नीशियम और बेसिकली RMGX will be like, bro, give me that H, and it forms this. You don't have SH and NH in your syllabus, but OH definitely in your syllabus. Strong base, just like KOH के साथ करता था ना, KOH निकाल देता था हाइड्रोजन को. So strong base. This is also extremely strong base. So the reaction of Grignard reagent with water and alcohol is called an acid-base reaction. Water and alcohol? Yeah, sure. Let's see. मैं इसको सिर्फ पानी में डालूंगा. I have made Grignard reagent somehow. उसको I'll just put it in water. Look at that. You get back the alkane. भाई साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, hold on. We started with alkyl halide. So this is a way of creating an alkane from an alkyl halide. Maybe there are easier ways, but this is the best way to make it pure. Okay, cool. So first you take that alkyl halide, you react with the magnesium, and then you put water in it. पहले आप dry ether में करो, then you do this. This is the step. This is what you do, and you get a massively strong base, OH minus, right? But RNGX is even stronger. Okay, cool, great. Similarly, अगर मैं alcohol साथ react करूं, तब भी same चीज बन रही है. The difference again is here, stronger than OH minus, stronger base. OH minus. अब stronger कैसे? pKa values. That pen fell away. Sorry about that. pKa values. What is pKa value? यार ionic equivalent पढ़ना पड़ेगा. मैंने बताया था. I've been saying pKa values from the starting. I've explained to you as to how and why ROH is a weaker base than water, and hence is a weaker acid than water, and hence RO minus is going to be a stronger base than OH minus. ठीक है? Even why are you spamming, bro? That's it. That was it. That was what was planned for today. अगले बार हम लोग बात करेंगे Woods reaction. If you're wondering हमने क्या किया है NCERT में so far, I'm going to quickly show this to you. What have we covered in NCERT so far? Hey, where did it go, dude? All right, there you go. What have we covered so far? ठीक है, ये पूरी चीज, everything from here to here. Yeah, we have covered. Oops. ये हो गया है, ये सब हो गया है. This is all done. Chiral molecule, sure, racemization. So you'll notice that they talk about this plus minus and they talk about racemization, but there is no RS configuration. So you don't have to know if something is RS configuration. It's mainly dextro or levo rotatory. Okay. Anyway, more on that when we do biomolecules. Abhi ke liye, this plus or minus is talking about whether it rotates plane polarized light or not. What is plane polarized light? Go to my bento link, check out the stereochemistry. I think I've explained that in detail. Or you can also read it from NCERT in the lab manual. Either way works. All right. हम लोग ये सब कर चुके हैं. We have also covered this elimination versus substitution, and we have just today अभी ये हमने किया है. और Victor Grignard उनके बारे में बातचीत जो की हम लोगों ने ये सब किया. We have done this. This is up next. Okay, how haloarenes react with this, and etc. etc. Yeah, sure. This is what we're going to do in the next session. So please read up on this, and we'll also do SNAR reactions, electrophilic substitution reactions, nucleophilic reactions on aryl compounds, and then we'll wrap it up with polyhalogen compounds, which is a lot of theory, lot of theory. So we're almost done. एक last session है on this. Please start doing the questions at the end of NCERT. And also, अगर extra सवाल करने तो पहले exemplar करिए. Before you do modules or 100 other things, please do NCERT inside out, because आजकल be it JEE main or NEET, directly सवाल यहाँ से आ रहे हैं. Even JEE advanced,
well, not in organic, but at least in physical chemistry and organic chemistry, a lot of things could be solved with stuff from NCERT. I'm not saying that's the only thing you need for JEE Advanced. All effort लगाना है, but please पहले NCERT तो करिए. My humble request to you. ठीक है, चलो मिलते हैं. That's all I had planned for you today. I'll see you around. परसों मिलते हैं and we'll wrap up this chapter. Right? Okay. Thank you everybody for your time. See you. Bye. Tata.